Friends, welcome to the Sonda Nursing channel. So in this video we are going to study about again abbreviations in psychiatric nursing. So psychiatric nursing में कितने abbreviation आते हैं सभी पढ़ेंगे. मैंने पिछले वीडियो में जो है ऑलरेडी कुछ एब्रिविएशन जो है अपलोड किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लो. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. सो लेट्स स्टडी अबाउट फर्स्ट एब्रिविएशन दैट इज़ GAD. GAD इज़ नथिंग बट जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. तो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म में GAD. नेक्स्ट इज GAF दैट इज़ Global Assessment of Functioning. Next is GAS that is General Adaptation Syndrome. Next one is GGT that is Gamma Glutamyl Transpeptides. Next is GTS that is Glycd-Churatin Syndrome. Then GHG that is Human Growth Hormone. Human Growth Hormone क्या बोलते हैं? HGH. Then next one is HIV that is Human Immunodeficiency Virus. Next is HPA that is Hypothalamic Pituitary Axis. And next one is HT. HT is nothing but healing touch. Next is ICD that is International Statistical Classification of Disease. समटाइम आपको क्वेश्चन जो है ICD के बारे में एक्सप्लेन करो करके भी आता है. नॉट ओनली पूरा नहीं आएगा कि ऐसा इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज ऐसा नहीं आ सकता है. समटाइम क्वेश्चन समटाइम आपको कैसे पूछे जा सकते हैं? एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ACD. एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज IEC that is Information Education Communication. Next is ILA that is Leniency Act. Next is INC that is Indian Nursing Counseling. Indian Nursing Counseling को क्या बोलते हैं? INC. ये तो पता ही होगा सबको. Then IQ is nothing but Intelligence Quotient. Next is ISM&H that is nothing but Indian System of Medicine and Homeopathy, that is ISM&H. Next is ISMO that is International Society for Mental Health Online. Next कौन सा है? ISPN that is Indian Society for Psychiatric Nurses. Next one is ITAQ that is Insight and Treatment Attitude Questionnaire. Next one is LSD that is Largic Acid Diethylamide. Next is MA that is Mental Age. Next one MAO that is monoamino oxidase. Next is MAOIs that is monoamino oxidase inhibitors. Next MDP is nothing but manic depressive psychosis. नेक्स्ट इज MHA दैट इज़ मेंटल हेल्थ एक्ट. फिर नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट अब्रिविएशन इज दैट इज MMSE दैट इज मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. नेक्स्ट MPA दैट इज मेडिको पोस्टरल एसोसिएशन. नेक्स्ट इज MRI दैट इज मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI. देन MSC दैट इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. नेक्स्ट कौन सा है? NACO दैट इज़ नेशनल एसिड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज NAMI दैट इज़ नेशनल अलायंस फॉर द मेंटली थर्ड. नेक्स्ट इज नंदा इज नथिंग बट नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन. नेक्स्ट इज NCCAM इज नथिंग बट नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन. नेक्स्ट है एनी का मतलब क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन. नेक्स्ट है निमैंस इज नथिंग बट दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस. नेक्स्ट NMHP दैट इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. नेक्स्ट वन इज NMS दैट इज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम. सो नेक्स्ट कौन सा है? NOS that is
Nothing otherwise specific. Nothing otherwise specific is NOS. Then noise. NOSI noise. Nurses abbreviation scale for impatient evaluation. Next is NREM, that is non rapid eye movement sleep. Then OCD, that is obsessive compulsive disorder. Next OCTC. Okay. OTC is nothing but that is over the counter. Over the counter drug बोलते हैं ना, that is OTC. Then PANS, PANSS, that is positive and negative symptom scale. Next is PCLN, that is psychiatric consultation liaison nurse. Next is PDD, that is pervasive development disorders. Next PET, that is progesterone emission tomography. Then PPP, that is postpartum psychosis. Next PTSD, that is post traumatic stress disorders. Next RAS, that is reticular activating symptoms. Next one is RAS. RA is nothing but reticular activating symptoms. Okay, वो हो गया. Next है REM, that is rapid eye movement. Then SDD, specific development disorder. Then SFRS, that is Schneider's first rank symptoms of schizophrenia. Next is SSRIs, that is selective serotonin reuptake inhibitors. ये ड्रग में जो है बहुत बार आता है SSRIs. अगर आप ड्रग में लिखते हो तो ओनली SSRIs नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स जो आते हैं, राइट. नेक्स्ट इज TCAS, दैट इज ट्राईसाइकिल एंटी डिप्रेसेंट. ये सभी जो है ड्रग में ही है. देन TCL, दैट इज ट्रेनिंग इन कम्युनिटी लिविंग. Then next one is THP, that is trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl. Next one is TLE, that is temporal lobe epilepsy. Next TMD, that is transitory mood disorder. Next one is TMS. TMS is nothing but transcranial magnetic stimulation. Next is TRADA, that is total response to alcohol and drug abuse. Next is TRS, that is thyrotropin releasing hormone. Then TT, that is therapeutic touch. Then UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. And next one is that is VNS, that is vagus nerve stimulation. Next one is WAIS, that is Wechsler's Adult Intelligence Scale. उसे क्या बोलते हैं, WAIS. Then WFMH, that is World Federation for Mental Health. Next is WHO, that is World Health Organization. And next is WISC, that is Wechsler इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन. अडल्ट में क्या है, WAIS, दैट इज विजुअल अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल. WISC, अगर C आया तो चिल्ड्रन और S आया तो दैट इज अडल्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.